اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر دبا چکا. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان، بالکل حیوان بنا دو. انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ And that means you can't rely on the media as it is today either. Oh, of course not. All the media in this country, radio, television, and print, is all owned by 5 corporations. All of these corporations that own the media are owned and controlled, and members of the Council on Foreign Relations sit on the board of directors. Can you name those 5 corporations? Is that... Not off the top of my head. Okay. I could try, but I don't want to take a chance on being inaccurate. But you can trace that yourself. Okay. Remember, if you go down and you trace the ownership of a station or a newspaper and you get to a corporation, remember that somebody owns that corporation and it's usually another corporation. But when you trace the interlocking of all these things, when you get to the top, there's 5. And all journalists know that there's some things you don't write about and you don't talk about because you'll lose your job. And that's where the control is. And that's why they pay anchormen like Dan Rather $2 million a year, because he doesn't question them. He knows that if he goes against them, he's going to lose $2 million a year. Do you think a man that looks pretty and sits in front of a TV camera for the 6 o'clock news is worth $2 million a year? No way. I don't care how long he works and I don't care what he does. There is no job worth $2 million a year.
That's why they pay athletes these fantastic salaries. I was listening to the radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive, and when the people are asking questions, and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated, so they don't ever question the emperor. That's why they pay a player on a football team or a baseball team $1 million or $2 million or $3 million a year. It is the Roman circus. I know men who don't know anything in the world except who plays third base for the Mets, and they think that's a great accomplishment, and they meet and pat each other on the back and bond and go have cocktails and talk about what this guy that plays third base for the Mets did in last night's game. It's sad. It's really sad. Is there any room in a kind of society where these manipulations are not taking place for this type of entertainment, or any type of entertainment at all? If people understand that a game is a game, if people understand that nobody, no matter what they do, is worth paying $2 or $3 million a year for, people should be able to get rich if they want to, by the sweat of their individual labor. Okay? By going out and doing something for the world. Not by taking people's minds away from the emperor. It's a game. Football's a game. Football's a game. But let me tell you something. When 150 of the most powerful men and women in the world can meet in secret in Baden-Baden, Germany, and plot the fate of billions, and nobody even cares about it, but 6 football players go to lunch together, and it's in the headlines across the country, you have a reflection of the society in which that exists. And it is a sick society that is doomed to self-destruction. So based on that scenario, there's some truth into what these men are looking at. Absolutely, and that's what makes me so sick, is that I'm trying to wake up a people who on a daily basis are proving the ones that I'm warning them about to be right. Well, so that even though a minority, there are people out there that you recognize are awake to this, if they don't do something about it, they will lose that ability to be free in that way. That's correct. Whether they might think, well, I don't need to worry about it because I know what I know and I'm fine. That's it doesn't right. work that way. There's a connection here to everything. That is correct. That is absolutely correct. A nation of people who are willing to send their sons and daughters that they profess that they love to a foreign country to die, and they use the excuse to themselves that they're sending them off to defend our country, and they know damn well that's a lie, are doomed. अब ये जो आखिरी शेर है तो ये तो सबको ही ज़बानी याद होगा, लेकिन यहाँ मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये शेर दर हकीकत इस पूरी नज़्म की नुमाइंदगी कर रहा है। इससे ये जो मजाज खानकाई है, इससे सिर्फ सूफी वाला मजाज ही मराद ना लें, मजाज ग़ुलामी मराद लें। अभी जो मैंने ग़ुलामी की तशरीह की थी ना, कि भाई इसके अंदर बगावत ना पैदा हो जाए, इसके अंदर एहतिसाब करने का जज्बा ना पैदा हो जाए, ये किसी को सवाल करने जोगा ना हो जाए। इसके बरक्स जो भी सूरत हाल है वो असल में खानकाई तस्वुर है, वो अय्याशियों में पैदा हो। हर वो तस्वुर के जो आपकी गैरत मार दे, जो आपके अंदर की बगावत कुचल दे, जो आपके अंदर ये जो एहतिसाब कायनात का मादा ख़त्म कर दे, जो आपकी मज़ाहमत को तोड़ दे,
वो दर हकीकत खानकाई तसव्वुर है। वो जदीद फलसफे की सूरत में हो या तसव्वुफ की सूरत में हो, वो शेर व शायरी की सूरत में हो या याशियों की और मॉडर्निज्म की या जो लिबरलिज्म की सूरत में हो, जो आपको ज़माने के साथ साजगारी इख्तियार करना सिखाए या उसके नीचे दब के रहना सिखाए और उसका गुलाम बन के रहना सिखाए या उसका पुत्र बन के रहना सिखाए, ये सारा खानकाई तसव्वुर है। पहले वक्तों में ये तराशा गया था और आज के वक्तों में कई चीज़ें तराशी गई। इसके लिए जो बेहतरीन मिसाल इसमें चलें वो चीज़ भी आनी चाहिए वैसे, कि ये जो मजाज खानकाई है ना, इसमें वो भी शामिल करें, मजाज खेलो कूद, ड्रामों में मस्त रखो, फिल्मों में मस्त रखो। वो अब तो कोई ऐसी गेमें हैं कि वो आप जाके बच्चे के कान में भी फूंक मारे तो नहीं सुनता। यानी इतना तो मेरा ख्याल है कोई सूफी भी इस तरह मुस्तगरिक फिल्ला नहीं होता जितना ये मुस्तगरिक फिल गेम हो जाते हैं। और इसी में फिर शामिल कर लीजिए ये जो रोज कहानी नहीं आ जाती, और हरीम शाह इत्थे फड़ी गई, मीनारे पाकिस्तान इत्थे ए हो गया, ये जो सारी कहानियां आती हैं ये भी तो आपको आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। और फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये सब क्या है? और साथ ही अगर आपको अच्छा लग जाए तो सोशल मीडिया भी जो बेकार बातों वाला है, चलें कोई काम की बात हो, कोई दीन की बात हो, कोई अल्लाह रसूल की बात हो, और ये वो जाल है कि इसको गुलाम बना के इसके अंदर कोई नारा मस्ताना लगाने का जज्बा बाकी नहीं छोड़ना। ये मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाई में इसे, तो ये यानी जिक्रो फिक्र सिर्फ वही वाला ना लें मराद, ये सारा कुछ ले लें तो चले, वो तो फिर भी चले, उससे कोई नीली पीली रोशनी तो नजर आती होगी, इससे तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खिंच जाती हैं दिमाग में, थोड़े अरसे के बाद बंदा साइको हो जाता है। तो ये जनाब उसने जो शैतान ने अपने मुरीदों को और अपनी पार्टी को और अपने सिपाहियों को जो टास्क दिया है ता सुबह क़यामत तक के लिए, वो बस ये है कि मोमिन को महरूम यकीन रख ले, मोमिन के अंदर कोई बगावत का जज्बा ना पैदा हो। अच्छा वो अब आ जाए ना, वो दो शेर याद करें इकबाल के, है वही तेरे ज़माने का इमामे बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। और आखिरी शेर उस नज़म का क्या है? फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो तुझे सलातीन का परिस्तार करे। तो वो पीर साहब हूं, वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर साहब हूं, दानिश्वर साहब हूं, अल्लाह वाले हूं, गैरुल्लाह वाले हूं, जो भी हूं, जो आपको इस ज़माने के साथ साजगारी इख्तियार करने की और जब तक कुफ्र बवा का हुक्म दिया जाए उस वक़्त तक इताअत करते रहने की जो लोरी आपको देते हैं, ये हैं कि जो उसका मिशन पूरा करते हैं। और जो आपको बेजार करता है, चूंकि ये इस वक्त पूरी दुनिया शैतान की दुनिया, हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, ये दुनिया तौहीद से खाली दुनिया। इस दुनिया से जो आपको बेजार नहीं करता और आपको कहता है भाई बेटा ऑस्ट्रेलिया जा, यूरोप निकल जा, कनाडा पहुंच, और कुछ नहीं होता तो जल्दी से काबुल पहुंच के तो अमरीकी जहाज से चढ़ इमाम दीना, टहरा ना लटक इमाम दीना। तो ये वो है कि दर हकीकत जो आपको जमाने का परिस्तार बनाता है, इसके साथ साजगारी सिखाता है, यही आपका दुश्मन है। ये जिस रूप में भी हो, दाढ़ी वाले रूप में हो या बगैर दाढ़ी वाले रूप में हो, ये आपका दुश्मन है और वो आपका सजन है जो आपको बेजार करता है। और ये जो आपको इसकी परिस्तारी सिखाता है, ये जिक्र फिक्र सुबह गाई है जो इसमें मस्त कर देता है।